Good morning, students of class 5. Yes, we have completed chapter number 7. You all have done chapter number 7, and many of you have done the homework, and they have sent the same thing on my WhatsApp. I have checked it. Fine, it's very good that everyone have done the homework. Now, today we are going to start chapter number 8 from grammar again. Grammar, chapter number 8, the noun, possessive case. Now, what do you mean by possessive? First, let us try to understand the meaning of possessive. Possessive means ownership. Ownership or what? Possession. Ownership or possession. The meaning of possessive means ownership or possession. Students of class 5, look carefully. What do you mean by possessive? Possessive का मतलब होता है ownership, मालिकाना हक जमाना. Whose mobile is this? Whose marker is this? This is mine. यहाँ पे possessive का मतलब होता है हक जमाना बेटा. Possessive means ownership, मालिकाना हक. Okay. Now let us see the definition of possessive case. Students, let us see the definition of possessive case. Look at the board, everybody. Now let me write down the definition of possessive case. Possessive case. What do you understand by possessive case? A noun that shows ownership. A noun that shows ownership or relationship is called is ownership is a possessive case, is a possessive noun. Is a possessive noun. Look at the board, students. Students of class 5, I request you to look at the board. This is the definition of possessive case. A noun that shows ownership or relation is called possessive case. I hope you can see the definition on the board. Yes, a noun that shows ownership or relationship is called possessive case. Okay, clear the definition? Definition clear हो गया? I will explain it. The definition is clear. A noun that shows ownership or relationship is a possessive noun. Is a possessive noun. एक ऐसा noun जो मालिकाना हक दिखाता हो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? Possessive noun कहते हैं. Now look here. Look at the example here. Look at the example, students. I am writing here dog. Dog is a noun. अब इसको possessive case में change करना है तो क्या हो जाएगा? Apostrophe as dogs. Now look here, what is this? Ram. This is also a noun. Okay. अब ऐसा noun जो relationship या ownership दिखाता हो उसे हम possessive noun कहते हैं. ये noun आपका common noun है and this is what proper noun. एक और चीज याद रखना बेटा, हमने ये पढ़ा है कि अगर किसी noun में s या es लगाते हैं तो वो plural हो जाता है, लेकिन अगर हम apostrophe के साथ s यूज करते हैं तो वो क्या होता है बेटा? पोजीशन होता है, हक दिखाता है. Now look here, Ram. What do you mean by here? Ram, Rams. Okay, इसका मतलब होता है apostrophe s का मतलब होता है ये हम कारक के बारे में पढ़ रहे हैं, कारक. Okay, बहुत लंबा चैप्टर है, but according to your chapter, let us move directly to possessive case. What is possessive case? एक ऐसा noun जो ownership और relationship show करता है, then that type of noun is called possessive noun. Now you can see the example. Example देखिए आपको पता चल जा रहा होगा. What is the possessive case of dog? Dogs. Ram, Rams. यानी कि क्या होता है बेटा? ये की के का apostrophe s का मतलब होता है की के का. Now look at some more example. कुछ और examples देखते हैं. Look here. Look here. House of Rahul. Now how to write this? इसको हम possessive case में कैसे लिखेंगे? House of Rahul. तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे? Rahul's house. Rahul apostrophe s. Rahul's house. Yes. Many more example. बहुत सारे examples हैं बेटा, अगर आप देखना चाहें. Look here.
बैग ऑफ मिसेस वर्मा, बैग ऑफ मिसेस वर्मा। अब इसको चेंज करेंगे पॉसेसिव केस में, तो क्या हो जाएगा, मिसेस वर्मा के, मिसेस वर्मा apostrophe Verma's bag. This is called possessive noun. This is called possessive case or possessive noun. These nouns are in possessive noun and it's called possessive case. Students, now is there any doubt? Now फिर से देख लो बेटा, a noun that shows ownership, एक ऐसी संज्ञा जो मालिकाना हक या संबंध दिखाता हो, उसे हम क्या कहते हैं, possessive noun कहते हैं और possessive case कहते हैं. Now look here, house of Rahul, Rahul's house. Bag of Mrs. Verma, Mrs. Verma bag. Okay, now let us move on to some more examples, students. कुछ और examples की तरफ चलते हैं. और how to form. Let us see how to form. Formation of possessive case को हम form कैसे करते हैं? How to form a possessive case? We will study about formation of possessive case. Yeah. Now look at the board. Definition is clear. An example. Definition or example clear है everybody? Show me your thumb if it is clear. A noun that shows the possession or ownership is called possessive case or possessive noun. This is your definition बेटा. इसमें कुछ करना नहीं, हमें ये याद करना होता है. ये तो हमें याद करना है. What is noun? Noun तो ढेर सारे हैं. This is marker is noun. This cap is noun. All these are nouns. The only thing is that to understand, आपको ये सोचना होगा, ये समझना होगा कि possessive case होता क्या है. A noun that shows ownership, मालिकाना हक दिखाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, possessive case. Okay, now let us see how to form. कैसे बनाते हैं, कहाँ यूज करेंगे. Yes, now let us see formation of possessive case. Everybody look at the board carefully. I'm going to erase the board now. Formation of possessive case. Formation of the possessive case. How to form a possessive case. We are going to study. क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? हमने ये पढ़ लिया. We studied that what is possessive case. हमने definition पढ़ लिया कि possessive case होता क्या है. Now we are going to discuss about formation of possessive case. How to form a possessive case. Okay. Now students, please look at the board. The first point is that number one, the possessive. Okay, before this students, I would like to discuss some other thing. इससे पहले कि हमें ये, okay, now let us, okay, no problem. The possessive case of a singular noun. The possessive case of a singular noun. The possessive case of a singular noun is formed by adding what? By adding apostrophe s. Apostrophe s. Apostrophe s. Now this is the first point. ये फर्स्ट पॉइंट है कि सिंगुलर नाउन में को हम पॉसेसिव केस में कैसे बदलेंगे, एपोस्ट्रोफी एस लगा के बदलेंगे. अब हम चेक कर सकते हैं एग्जांपल. नाउ लेट अस सी द एग्जांपल. स्टूडेंट्स लुक एट द एग्जांपल हियर. द गर्ल पेन. दिस इज रॉन्ग. यहाँ पे देखो, ये पढ़ने से लगता है कि लड़की कलम है. द गर्ल पेन, लड़की कलम है. इट इज रॉन्ग. नाउ हाउ टू फ्रॉम, ये सिंगुलर है, गर्ल इज सिंगुलर. यस, इसमें क्या यूज करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस. नाउ लुक हियर, द गर्ल्स पेन, द गर्ल्स एपोस्ट्रोफी एस, द गर्ल्स पेन, यानी लड़की की कलम. लड़की, यह कलम लड़की की है या ये लड़की की कलम है. Got it? Everybody समझ में आ गया. इसको पढ़ो बेटा. द काउ मिल्क, क्या ये सही है? द काउ मिल्क यानी गाय दूध है.
Wrong. गाय का दूध means what? The cow's milk. The cow's milk means, what do you mean by apostrophe? Apostrophe क्यों लगाते हैं? इसका मतलब होता है बेटा का, की, के. एपोस्ट्रॉफी का मतलब होता है का, की, के. क्लियर एवरीबॉडी? गाय का दूध, लड़की की कलम. गॉट इट? क्लास 5 समझ में आ गया? I'll some more example. Let us see some more example. कुछ और examples देख लेते हैं. Now look here, some more examples. The horse tail. ये भी गलत है. It is wrong. This is also wrong. This is wrong. This is wrong. ये तीनों गलत है. Now look here. The horse tail. ये गलत, ये सही है. This is right. This is right. Now look here. The horse tail. यानी घोड़ा पूंछ है. सही है? No. Now उसको possessive case में change करेंगे, तब ये जाके it will turn into a correct sentence. Now the horse, H-O-R-S-E apostrophe S, the horse tail. Clear everybody? The horse tail यानी कि घोड़े की पूंछ, घोड़े की पूंछ. Now look here, apostrophe का मतलब क्या होता है बेटा? पोजीशन. की, का, की, के. का, की, के in Hindi. Okay, now let us see one more example. Let us see one more example. The king palace. The king palace. Palace means महल होता है. King means राजा. राजा महल. राजा का महल क्या होगा? The king's palace. The king's palace. अब ये सारा सेंटेंस सही हो गया. It is right now. Got it, students? Clear everybody? Turn on your video now, so that I can see your faces. If it is clear, show me your thumb. If it is clear, please show me your thumb. If it is clear. First point. First point, everybody. First point, clear now? This is the first point. Means क्या है? What is this? This is a singular noun. This is also a singular noun. This is also a singular noun. This is also a singular noun. Students of class 5, please turn on your video so that I can see your faces. Everybody, turn on your video, please. This is clear. Formation of possessive case में पहला point. The first point we studied that the possessive case of a singular noun is formed by adding apostrophe s, and these are the example. Any doubt? If it is clear, show me your thumb. First point. Clear now, everybody? Yes, thank you very much. Now let us come to second point. सिंगुलर नाउन में तो हम क्या करते हैं? एपोस्ट्रोफी एस लगाकर उसको हम प्लूरल में चेंज करते हैं. नाउ लेट अस सी द सेकंड पॉइंट. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. In first point, what we have learned? We have learned that in singular noun we add apostrophe s to make possessive case. Okay. Now let us see the second point. Now see the second point, students. Let us see the second point. Point number second, how to form possessive case. The possessive case of a plural noun. The possessive case of a plural noun ending in s is formed by adding apostrophe only. Apostrophe, by adding apostrophe only. Now see the second point, students. Look at the second point. What is written here? Second point, the possessive case of a plural noun ending with s. ऐसा plural noun, एक ऐसा बहुवचन जिसके लास्ट में s आता हो, then is formed by adding apostrophe only.
लास्ट में अगर प्लूरल नाउन है और लास्ट में एस आ रहा है तो हम केवल क्या करेंगे, एपोस्ट्रॉफी यूज करेंगे, उसमें एस यूज नहीं करेंगे। वी आर गोइंग टू यूज ओनली एपोस्ट्रॉफी। नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा, इन पॉसेसिव केस, फॉर्मेशन ऑफ पॉसेसिव केस। इन फर्स्ट पॉइंट वी हैव लर्न दैट possessive case of a singular एक वचन singular noun is formed by adding apostrophe and s, but the possessive case of a plural noun ending in s is formed by adding apostrophe only by adding apostrophe। केवल apostrophe लगाकर उसे हम possessive case में change कर सकते हैं। Now let us see the example, students, look at the example here। The example, like if it is written here boys, now change this, इसको पॉसेसिव केस में चेंज करेंगे, यहाँ पे लास्ट में है। अब हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू राइट हियर बॉय एपोस्ट्रोफी एस, दिस इज रॉन्ग स्टूडेंट्स, बिकॉज ये प्लूरल है, इट्स प्लूरल एंड इट इज एंडिंग विद एस। तो यानी बहुवचन अगर संज्ञा है, बहुवचन संज्ञा है, तो उसको हम पॉसेसिव केस में कैसे चेंज करेंगे, ओनली बाय एडिंग एपोस्ट्रोफी। नाउ लुक हियर, ओनली बाय एडिंग एपोस्ट्रोफी। नाउ लुक हियर, बॉयज, देन एपोस्ट्रोफी, yes here s के बाद apostrophe, only by adding apostrophe। now look here again, girls क्या हो जाएगा, apostrophe possessive case, girls। okay, now see again, birds, birds, then write down again, birds apostrophe possessive case में change हो गया। now see again next, that is nest, nest, इसको चेंज करेंगे, क्या होगा, नेस्ट एपोस्ट्रोफी, हॉर्सेस, हॉर्सेस, देन एपोस्ट्रोफी, यस। क्लियर स्टूडेंट्स, अगर प्लूरल फॉर्म में है तो वहां एस ऐड नहीं करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू ऐड एस, ओनली बाय एडिंग एपोस्ट्रोफी इट चेंजेस फ्रॉम अ प्लूरल नाउन टू पॉसेसिव नाउन। व्हाट इज दिस, ये कॉलम किसका है, दिस व्हिच कॉलम इज दिस, इट्स अ प्लूरल नाउन। व्हाट इज दिस, इट्स अ प्लूरल नाउन, ये प्लूरल नाउन है, यस। नाउ इसको पॉसेसिव केस में चेंज कर दिया, देन दिस कॉलम, दिस होल कॉलम इज व्हाट, इट्स अ पॉसेसिव नाउन, इट्स अ पॉसेसिव नाउन। डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ये पॉसेसिव नाउन है, इट्स नॉट अ प्लूरल नाउन बट इट्स अ पॉसेसिव नाउन, प्लूरल नाउन बट इट्स अ पॉसेसिव नाउन। क्लियर स्टूडेंट्स, क्लियर कि सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट में सिंगुलर, इफ द नाउन इज सिंगुलर we are adding apostrophe s, if the noun is plural and ending with s, अगर noun plural है और इसका अंत यानी एंड, वो नाउन का एंड अगर एंड में अगर s है तो क्या यूज करेंगे, ओनली एपोस्ट्रोफी। क्लियर, ओके फाइन, थैंक यू वेरी मच। नाउ लेट अस सी द थर्ड पॉइंट। Okay, students, now let us see the third point. The possessive case, the possessive case of a plural noun not ending with s is formed by adding apostrophe then s, apostrophe then s, yes। now students look at the board, the possessive case, देखो बेटा प्लूरल में दो पॉइंट्स आ रहा है, प्लूरल में ऐसा पॉइंट्स आ रहा है, लुक हियर, इफ आई एम राइटिंग हियर माइस, ये प्लूरल है, दिस इज प्लूरल, राइट, ओके, एंड इफ आई एम राइटिंग हियर बॉयज, ये दोनों प्लूरल है, दोनों में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ, दोनों में अंतर यही है कि इसकी एंडिंग एस से हो रही है और इसकी एंडिंग एस से नहीं हो रही है। इफ अ प्लूरल नाउन not ending with s, what I have written, the possessive case of a plural noun not ending with s, यानी कि जिसके अंत में s नहीं आता है, तो उसको कैसे चेंज करेंगे, अगर s आता है तो केवल how to change, if there is s
then what we were adding only apostrophe, ये possessive case में change हो गया. Now change this mice to possessive case, ये last में s नहीं है. Then how to change? We will write here mice apostrophe s. Done. Everybody clear? Students clear? Come on, show me your pictures and show me your video. Na, turn on your video and show me your thumb. Yes, raise up your thumb and try to answer it. Come on, students. Many of the students have left. Why? Arya Tripathi, turn on your video. Clear ना? If it is singular, अगर singular है, like write down boy. What is boy? ये singular है. इसको possessive case में कैसे change करेंगे? तो हम लिखेंगे boy apostrophe s. Like इसी same case में here boys लिखा हुआ है. It is plural और ending किससे हो रही है? s से. तो इसको क्या कर देंगे? केवल apostrophe लगा के हम possessive case में change करेंगे. Now mice is plural but not ending with s. Mice here, mice is plural but at the end there is no s. Means this word is not ending with s. So what we are going to use here to make it possessive? Apostrophe s. Clear everybody? Clear? Fine. Now let us discuss more. Let us study. Let us study or let us recall. Not we are not going to recall again. We will see possessive case आते कहाँ हैं, होते कहाँ हैं, कैसे change करेंगे, कब change करेंगे. Okay. Now I'm going to erase this. This is the 3 points. Remember 3 points, students. 3 points याद रखना. Okay. Some more points I'm going to tell you. Some more points. Yes, this was the formation. We have learned how to form a possessive, a singular or a plural noun to a possessive noun. हमने ये सीखा कि एक singular noun या plural noun को possessive case में कैसे change करते हैं. Okay. Now let us see the form, not the formation, some notes. कुछ notes देख लेते हैं बेटा. कुछ notes now. Notes. Let us see some notes, students. Note number one. Note number one. We add an what? Apostrophe and s to a noun, to show ownership. Ownership, that is possession. Ownership, that is possession. अगर किसी भी noun में, first point is that we add apostrophe and s. Look here, students. What is this? ये क्या है? This is apostrophe. Apostrophe. Mark of apostrophe. This is punctuation mark. ये punctuation mark है, and this punctuation mark is called apostrophe. Now look here. Note. We add an apostrophe and then s to a noun to show ownership. किसी भी noun में अगर हम apostrophe और s लगाते हैं तो मालिकाना हक दिखाने के लिए, possession दिखाने के लिए. Okay. Whose cap is this? This is mine cap. Rajesh cap. Rajesh apostrophe s. Rajesh cap. Yes. मालिकाना हक शो करने के लिए. Fine. Now let us see the next point. Point number 2. Notice number 2. Notice number 2 is that a possessive noun always comes before the noun that belongs to it. क्या मतलब है इसका? What do you mean by this? इस सेंटेंस से क्या समझ में आया? A possessive noun always comes before the noun that belongs to it. Possessive noun हमेशा noun से पहले आता है जिस noun से वो belong करता है. Now look here. Example में देख लेंगे. The cat's dish. ये डिश किसका है? कैट का है. राइट. Whose dish is this? This is
cat this. Yes, so a possessive noun always comes before a noun, always comes before. This is possessive. This possessive noun always comes before a noun. This possessive case always comes before a noun. Possessive case हमेशा noun से पहले आता है जिस noun का वो belong करता है. Which here I have written, a possessive noun always comes before the noun that it belongs to it. That it belongs to it. Now here the cat's dish. Whose dish is this? If I ask you a question, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ये डिश किसका है? आपका है? नो, इट्स नॉट योर डिश, इट्स द डिश ऑफ द कैट. मतलब इस कैट का डिश है इसलिए इसके सामने आ रहा है. नाउ लेट अस सी वन मोर एग्जांपल. इट इज राम, इट इज राजेश apostrophe is cap. Now look here, whose cap is this? ये कैप किसका है? It's my cap ना, ये मेरा कैप है. तो ये कैप ठीक मेरे सामने आ रहा है, राजेश कैप. It is Rajesh cap. Means what? What I have written? A possessive noun always comes before the noun that belongs to it. A possessive noun जो होता है बेटा वो हमेशा noun से पहले आता है, जिस उस noun से पहले आता है जो उसको belong करता है. Means here what I have written means this cap belongs to Rajesh. So this possessive case is just in front or just before the noun. Clear everybody? Clear? Okay, fine. Now let us see the next question, next point. Let us see the next point, students. That is the point number third. Point number third. Just a second. Yeah, only 2 points. Yes, remember this, only 2 points. There is nothing. Singular, plural, I have already taught you. So these are the notes. To make a possessive case, we use apostrophe. To make a noun to a possessive case. एक noun को possessive में convert करने के लिए हम apostrophe use करते हैं. Yes, in notes we are studying here that we add an apostrophe. हम apostrophe लगाते हैं to a noun to show ownership or possession. To show ownership or possession. Next point is that a possessive noun always comes before. Always, it comes always before a noun that it belongs to. Okay, this was the point. Now let us see some what to say class work. कुछ क्लास वर्क के तौर पे देख लेते हैं. Just a second, just wait for a few. Now let us see some examples. The pen belongs to Ram. The pen belongs to Ram. Now change it to possessive case. Change करना है इसको. Ram's pen. Ram's pen. Possessive case में change हो गया first. Number 2. It is the house. It's the house of Ria. Now change it to possessive case. It's Ria's house. Ria's house. Clear, students? Okay. We will continue the same class tomorrow again. Same thing with some more examples. कुछ और examples के साथ कल हम इसी chapter को फिर से करेंगे. Okay. Till then, if you have any doubt, you can ask me. Is there anyone who is having doubt? किसी कोई बच्चा है जिसको कोई doubt है? Just a second.